Hello, hello. Okay, so uh, so guys, we just started with the economic geography, as you know it well, and economic geography, that is the branch that overlaps with the geographical branch that overlaps with the economical aspects of the world, which has further four branchings: agriculture, resource, trade, transportation or transport geography, and रिसोर्स ज्योग्राफी इटसेल्फ. ठीक है, तो ये 4 different branches है of the economic geography, and we are now at the first
firstly we are dealing with the very initial aspect of this economic geography that deals with the basics of it, and that is with respect to further world, है ना? तो world agriculture, world resources, world industry, world transportation, और बाकी world development and growth and development measures and indices. So this is what the overall core of the syllabus. Now see, today what we are going to, in the last session already, as you know it well, what we did, we had a discussion on the limits to growth model and रोस्टर stages of growth, है ना? दो important जो models थे, दो important जो areas थे हमारे studies के, like limits to growth model that simply deals with the what are the limitations to the growth, that growth is not it cannot be limitless. There are some limitations itself put down by nature, itself put down by the human adaptation, the human resource identifiability, okay? And then thus say growth is simply not unlimited. So you have to consider this fact that growth is absolutely not unlimited, and thus there is limits to growth. तो फिर limits to growth हमको identify करना based on population, based on resource, based on agriculture productivity, based on industrial productivity and pollution. So 5 different factors were there on on basis of which we finally arrived at that how many permutations and combinations like we have, okay, or we will implement even in the future. Say the earth or the whole of her system will collapse by 2100, है ना? तो by 2100 that is going to happen. This is what the very proposition of the limits to growth model. The next is what the communist manifesto, or sorry, the capitalist manifesto, that is again that is Rostow stages of growth, that simply supports the argument that capital investment is rather much necessary. The capital investment is rather much needed for the purpose of ensuring the growth and development of any society, any region, and thus any society it went through like traditional stage, precondition to take off, dry to maturity, and age of mass consumption, जो कल हमने already discuss कर लिया था. So this 5 different stages, and yes, each of this stage are again say as because every country lies in one or the other phase of this transition. So there is need to understand what you have to do further, okay, what kind of if measures you need to take further to advance for the or to take a leap forward further for the advanced stage. So I hope वो सारी कुछ चीजें आपको cleared है. And now we are going to start with I believe see ये जो topic है that is somehow factual in nature, because what it is not necessary so logical in nature, logical on the ground, that you have to remember few region, you have to remember the few largest producer, few largest areas, those are in that particular country. So ये जो particular topic hai, keep it or consider it further like a factual, okay, and what you are going to make or have a notes of it, and then you will write it and remember it just accordingly, because there seems no other alternative के इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हम connect नहीं कर सकते, क्योंकि जियोलॉजी में जाएंगे so that will be again a time taking or time consuming process itself, okay? So because again the thing is you have to understand this world resources, the reason being this world resources then ultimately help us to understand world industries as, है ना? So considering all this aspect we have to start this world resource distribution. See, as you know, like resource are what, or resource is what? It is simply any living or non-living aspect, any living or non-living aspect that has potential to be utilized for something, that has capacity to be used for or to fulfill some human needs and demands. So resource, it is simply any living or non-living being we consider has potential to do something best for human being, not to be like best, but yeah, to do to fulfill some human needs and demands. So that is what the resource. So you will find, जैसे हमने already इसको discuss कर लिया था, I'm not going to have like discussion on this क्योंकि Indian resources में हमने already ये सारी कुछ चीजें देख लिया. तो like there just could be living resources, non-living resources, renewable resources, non-renewable resources, mineral resources, non-mineral resources, right? तो ये सारे कुछ different जो categorizations थे already we had a discussion on this, और आज हम क्या करेंगे, बस एक उसका quick like world distribution के लिए उसका एक overview और that discussion will be engaged.
तो देखो वर्ल्ड रिसोर्सेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन. So what, like the resources are simply anything that can be used by human being. Though अब इस particular definition का ये जो need है, that is absolutely economic in the sense because economy it fulfills, okay, or economic demands that then fulfill the overall needs and understanding of the uh, human needs, right? तो ये जो definition है, that is from the economic perspective, and as I told you even earlier, क्या ethical perspective से, if like it is not only for human being but it can be used by any other living individual. Fine. The classification on the basis of development and use actual resources, potential resources that they will be used in future, but they are having potential to be potential forces. Then on the basis of origin, abiotic and biotic, living or non-living. On the basis of stock, renewable, non-renewable. Yes, good morning. Good morning, good morning. So renewable or non-renewable, or then on the basis of distribution, ubiquitous or localized. तो क्लास का टाइम लेट करना पड़ेगा नहीं. साथ इतने लेट क्यों आती है मेट्रो? अच्छा, फ्रीक्वेंसी कम होती है. अभी कुछ दिन तो खैर चलेगा, अब जब तक कि ये चीज और कोई अल्टरनेटिव नहीं है इनके पास, तब तक तो ठीक है, तब तक तो मैनेज कर लेंगे क्या. सो वी जस्ट स्टार्टेड विद द वर्ल्ड रिसोर्सेस. वर्ल्ड रिसोर्सेस जो है, रिसोर्सेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे. देखो इंडिया के केस में, इंडिया के केस में हमने ऑलरेडी रिसोर्सेज डिस्कस कर लिए थे. फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, ये सारे कुछ चीजें डिस्कस कर लिए थे. काजल कुछ याद तो आ रहा है ना? हाँ, तो ये डिस्कशन हो गया था. एंड नाउ इट्स टर्न फॉर, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 4 ब्रांचेस थे, आई टोल्ड यू दैट डे एज वेल. रिसोर्स ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी. तो इसका पहला जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है रिसोर्स ज्योग्राफी. तो ये सारे कुछ अब देखो रिसोर्सेज के टाइप्स है. On the basis of development of use actual and potential resources, on the basis of whether origin living or या non-living है, abiotic and biotic, on the basis of stock, फिर यहाँ पे है renewable या तो non-renewable, on the basis of distribution, ubiquitous and localized. देखो अभी दो टर्म है जो हमको फिर से यूज होंगे इन दी वेबर्स इंडस्ट्रियल मॉडल. वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल एक डिस्कस करेंगे हम जब इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे. सो ओवर देयर यू विल फाइंड ये दो टर्म्स फिर से आएंगे, ठीक है, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड. नाउ यूबिक्यूटस को समझने के लिए पहले लोकलाइज समझो. लोकलाइज इट मींस कि जो रिसोर्सेज दोज आर हाईली localized in nature. You won't find those are universal over on the earth surface. जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड. गोल्ड आपको हर जगह नहीं मिलेगा. गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाउ डेज, दैट इज चाइना. साउथ अफ्रीका में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस हुआ करता था इन द 50s एंड 60s एंड इवन लेटर, राइट. सो दिस रिसोर्सेस आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर डोमेन. और इनफैक्ट जैसे हमने दैट task was given to you to identify difference critical minerals, strategic minerals or rare earth mineral. तो ये सारे लोकेशंस आप या मिनरल्स देखोगे कि those are highly distributed. They are not concentrated over in one, sorry, they are concentrated over in the only one particular region. तो ये जो resources होंगे those are localized resources. छोटा नागपुर पेटू रीजन, आयरन सारा हमारा वहीं पे, मेजॉरिटी कोल. अब ubiquitous resources are what? Those resources, those are available in abundance all across the earth surface. Like for example water, you'll find water more or less सारी जगह पे available है. Air, land, you'll find ये कुछ ऐसे resources है those are ubiquitous in nature जो आपको almost हर किसी जगह पे मिल जाएंगे. सिलिका, yes, almost हर किसी जगह पे मिल जाएंगे. So ubiquitous resources, those are having their presence all across the globe, and localized resources are simply those are having their presence only in concentrated pockets. Now देखो अब हम स्टार्ट करेंगे. अब देखो इसमें पहले ये है मैंने बता दिया कि दिस टॉपिक इज अ बिट फैक्चुअल टॉपिक.
ठीक, क्योंकि इसमें जैसे हमने इंडियन रिसोर्सेज देखा था, अब वैसे ही केस में है, बट इंडियन मिनरल मैप ड्रॉ किया था हमने, अगर याद होगा उस मूवमेंट पे, है ना, तो उसके थ्रू हमने इसको कनेक्ट करके याद रखा था। बट अब क्या है इस केस में ना, हमारे पास मिनरल मैप का कोई स्कोप है नहीं वर्ल्ड वाला, एंड ड्यू टू विच व्हाट हैपन नाउ, अब इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आएगी। और अगेन एज लाइक वी गाइज आर नॉट मच अवेयर अबाउट ईच ऑफ दिस रीजन, जैसे काजल का ये भी था ना कि सर ये ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं, तो ऐसा ही कोई और भी स्टूडेंट यही बोलता है कि इंडिया के नाम है ऐसे कैसे है। तो विल फाइंड कि ये जो नाम्स है ना, दे आर वेरी ऑड फॉर अस, एंड समटाइम्स यू विल फाइंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर एज वेल, बट इसको कुछ नहीं, कुछ लोकेशन या कुछ मैप के थ्रू इसको याद रख लो और काम हो जाएगा, और नहीं होता है तो वैसे इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। ओके, तो स्टिल लाइक विल बी हैविंग डिस्कशन ऑन फ्यू ऑफ द मिनरल रिसोर्सेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आयरन और, अब iron, that is anyway the driver of civilization, and this iron is highly, or to be more precise, unevenly distributed on the earth's surface. This iron is again the largest producer of the iron ore you will find, that is Australia. ओके, ऑस्ट्रेलिया में इसके रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा है, एंड इक्वली ऑस्ट्रेलिया की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी or production capacity is equally high, and due to which we'll find Australia, for the case of iron ore, is the world's largest producer, followed by Brazil and China. तो ऑस्ट्रेलिया का एक रीजन है, दैट इज पिलबारा region of the Australia is very famous for this production of iron, along with this Cully knobbing, आयरन ड्यूक एंड आयरन नॉब. दिस आर फ्यू लोकेशंस इन द ऑस्ट्रेलिया. देखो ऑस्ट्रेलिया में जनरली जो लोकेशंस होंगे ना, यू विल फाइंड कि ये यूरोपियन नाम से होंगे. द रीजन बीइंग क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द यूरोपियन नेशंस इटसेल्फ. तो ये कुछ रीजंस है. ऑस्ट्रेलिया इज एनीवे द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ब्रिटेन यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन वंस अपॉन अ टाइम. ठीक, ब्रिटेन, यूके, क्योंकि उस टाइम पे कॉलोनी का भी प्रोडक्शन आता था वहां पे, और नेचुरली जो प्रोडक्शन सेंटर्स है दोस वर इक्वली प्रेजेंट ओवर इन दी से ब्रिटेन. लेटर दिस टैग वाज लाइक टेकन बाय द यूएस. ग्रेट लेक रीजन है यूएस का. इट इज इक्वली हैविंग ग्रेट रिजर्व्स ऑफ आयरन. बट व्हाट हैपेंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे फिर ऑस्ट्रेलिया में भी और explorations हुए, माइनिंग्स हुए, and then it get to know कि Australia is, at least as of now, is having a best grade of iron ore. So Pilbara, Iron Duke, Iron Knob, these are the famous destination. Along with you will find in China, जैसे चाइना में Manchuria, Xinjiang, Shandong, these are what the regions of China जहां पे ये प्रोडक्शन सेंटर्स है या प्रोडक्शन हब्स है ऑफ द आयरन ओर. Along with फिर ब्राजील में या यूरोप में देखो रूर इज वेरी फेमस फॉर, दैट इज एक्चुअली लाइंग इन द फ्रांस एंड ऑन द फ्रांस एंड जर्मनी बॉर्डर. ये रूर जो रीजन है, इट इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ कोल प्रोडक्शन. इट इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ आयरन प्रोडक्शन एज इक्वली. तो दिस रीजन रूर, साउथ वेल्स, क्रिवॉय, this Bilbao and Lorraine of France, these are famous destinations of iron ore production. I told you फैक्ट रहेगा थोड़ा, तो फैक्टफुल तो चीजें रहेगी इसमें, तो बट अगर याद हो सके तब रखना, अदरवाइज कोई ऐसे नीड नहीं है. दिस इज व्हाट द मैप ऑफ वर्ल्ड आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब इसमें से कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होगी. देन नेक्स्ट है मैग्नीज. जनरली इट इज ऑब्जर्व दैट कि जहां पे आयरन होगा वहीं पे मैग्नीज होता है जनरली. ठीक है, बट वर्ल्ड में इसके कुछ कुछ डिस्क्रीट एग्जांपल्स है. ऐसे नेसेसरी नहीं है कि जहां पे आयरन है वहीं पे मैग्नीज भी इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हो. सो फॉर द केस ऑफ मैग्नीज, नाउ यू विल फाइंड दिस साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका इज रादर ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. अब the second largest producer is again, that is what with the largest producer of the iron, that is Australia. दो ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में मैग्नीज के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट से कैपेसिटी है या रिजर्व्स है, बट अभी वो आइडेंटिफाइड नहीं है. सो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, दिस थ्री आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज एज इन द वर्ल्ड. अब मैग्नीज का सिग्निफिकेंस भी यही है कि ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री में
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका एक्सटेंसिव यूज है. दैट टाइम आई टोल्ड यू, जैसे अगर 1 kg ऑफ आयरन अगर प्रोड्यूस करना है, स्टील सॉरी, तो यू नीड 6 kg ऑफ मैंगनीज, Mn, manganese. In China, you will find the Jiangxi, Yunnan, then Guangdong, क्वेचू. ठीक है, ये कुछ रीजंस है कि जहां पे इसका प्रोडक्शन सेंटर्स है या प्रोडक्शन हब्स है, जो माइनिंग सेंटर्स है. नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, केप प्रोविंस. गैबन, that is in Africa again, that Gabon on the western margin, it is equally mineral rich. छोटी सी कंट्री बट स्टिल दिस म्यांडा माइन एंड ब्राजील एमापा माइन. ठीक है, तो ये कुछ लोकेशन है जहां पे वर्ल्ड में मैग्नीज का प्रोडक्शन इज इक्वली हाई. साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, दीज आर द 3 मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज. और आई टोल्ड यू इसका बाकी यूज तो हमने इंडिया में, इंडियन रिसोर्सेस में देख लिया था इसका, तो वहां से कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है कॉपर. देखो काजल, कॉपर इज बेसिकली व्हाट, सच अ रिजर्व कि जिसका कंसंट्रेशन on the earth's surface or crustal part is very less. Though copper is present like in a high amount on the earth's surface, but majority जो copper है ना, ये deep inside the earth's surface है, तो इसका exploration is not that feasible. So hardly you will find like 0.01% of copper you will find somewhere around or lying over on the earth crustal part. अब इसी में फिर क्या है, हमारी सारी कुछ basically competitions है. So India is not fortunate to have good enough copper production center. एक बेल्ट जो हमने देखा था कॉपर इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो बेल्ट था एक सेकेंड वाला जो बेल्ट था, नागपुर एंड भंडारा छिंदवाड़ा वाला जो रीजन था, सेंट्रल प्लेटू वाला रीजन, और नेक्स्ट जो बेल्ट था नॉर्थ वेस्ट प्लेटू रीजन, सो 5th वाला बेल्ट. सो फॉर द केस ऑफ वर्ल्ड, however the condition is much like difficult. Hardly 0.01% of copper is present, and only a few copper deposits content is found up to 3 to 5%. What does that mean? कि अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर आपने डिपॉजिट देखा है, कोई माइन है, 100 kg कॉपर वहां पे डिपॉजिट्स है, तो जब इसको स्मेल्ट करोगे, स्मेल्ट इट मींस बेसिकली कि उसके रिमूव करोगे इंप्यूरिटीज एंड एवरीथिंग, इट इज हार्डली एबल टू प्रोड्यूस 3 to 5 kg ऑफ कॉपर. एंड दिस प्रोसेसिंग इट रिक्वायर्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट. इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी, देन अगेन ट्रांसपोर्टेशन, स्मेल्टिंग एंड एवरीथिंग एज इन, इट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट. इसीलिए फिर ये वायबल भी नहीं है. बट स्टिल चिली, that is having the largest producer of the copper, along with फिर से ये आएगा चाइना वाला रीजन है या ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, देन पेरू, मैक्सिको, these are what few producing centers. अब इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व जो है ऑफ कॉपर, दैट इज Mount Chiquimcamta. Chiquimcamta. So Chiquimcamta है ना, हाँ ऐसे ही है वो. देन एल सैल्वाडोर और ला अफ्रीकाना. ठीक है, ये कुछ इसके, हाँ सेकेंड वाला, ये सारे रीजनल नेम्स है ना. तो देखो ये वाले कुछ लोकेशंस है, इसको देख लेना, इसको पढ़ भी लेना अबाउट दी कॉपर प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड. ओके, अफ्रीका, वैसे हर किसी वर्ल्ड लोकेशन पे नाम ऐसे डिफिकल्ट है. देन एल्यूमिनियम, बॉक्साइट. सी वर्ल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, वैसे जो इसकी ओर रहेगा दैट इज द बॉक्साइट मेनली, and the world's largest producer is rather that African country है, that is this Guinea. Okay, this Guinea, that is African country, 26%. UPSC like had a question on which of the following country is having the largest deposits of cobalt. लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोबाल्ट, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये. वैसे जैसे कॉपर था, हमने इसमें ऐड नहीं किया है, बट दैट इज व्हाट है कॉन्गो.
So you'll find many African countries are excessive reserves of minerals and mines, and that is what one of the problem with the African region, क्योंकि इतने ज्यादा रिसोर्सेज है यहाँ पे, तो फिर एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज्यादा होता है उनका, ठीक है, कॉलोनाइजेशन. सो गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, वियतनाम, जमैका, इंडोनेशिया, these are what those few regions है और countries है which are having production capacity. अब फिर से वही है, like ऑस्ट्रेलिया, this Cape York Peninsula, then न्यू साउथ वेल्स एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. यू विल फाइंड मोर और लेस यूरोपियन नेम्स रहेंगे क्योंकि यूरोपियंस ने ही कॉलोनाइज किया ऑस्ट्रेलिया को. चाइना, यूनान, दिस क्या है ये, एंड ये एक्चुअली ये होना चाहिए सिंचुआन, है ना, सिंचान, यू रखा है ना उन्होंने. ब्राजील, अच्छा ये हम प्रोनाउंस करेंगे वहां पे जाके तो वो और भी ऑड फील होगा उनको, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली कुछ और होगा, तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ है तो कुछ उसमें चेंजेस आ गए रहेंगे, है ना, बट चलो ठीक है. सो यूनान, दिस गुचाओ एंड देन सिंचुआन, सो दीज आर व्हाट दोस प्रोविंस है. ब्राजील सेंट्रल रीजन, मोस्टली लाइक सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजन यू विल फाइंड ब्राजील में, जहां पे माइनिंग रिजर्व्स है. एंड देन इंडिया, आई टोल्ड यू ये है ना टॉपिक जो है वो बिट फैक्चुअल है. फैक्चुअल इन द सेंस कि अब इसमें रीजंस भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा कुछ वेल नोन रीजंस है नहीं हमारे लिए, और ऐसा है कि उसमें कोई लॉजिक नहीं है. मतलब लॉजिक इन द सेंस कि अब इस लॉजिक को ढूंढना है तो यू हैव टू एंटर इनटू द डोमेन्स ऑफ जियोलॉजी देन, क्योंकि हर कोई मिनरल बनने के पीछे कोई जियोलॉजिकल रीजंस है, तो फिर हमको वो जियोलॉजिकल रीजंस ढूंढने पड़ेंगे, और फिर जब ये ढूंढेंगे तो पता चले ये टॉपिक से हम ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगा. सो इट्स बेटर कि इस टॉपिक को हम इसी डेप्थ में पढ़ ले कि जितना इसके ऊपर नीडेड है, क्योंकि दिस लोकेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वर्ल्ड इंडस्ट्रियल लोकेशंस के क्यों रूर में फिर लोकेशन है, या ग्रेट लेक रीजन में, या अफ्रीकन रीजन में, या इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में, सो दैट यू देन विल बी हैविंग दैट आइडिया अबाउट. ठीक है, तो ये है एल्यूमिनियम, बॉक्साइट और नेक्स्ट गोल्ड. देखो गोल्ड is basically what actually India used to be a largest producer of the gold once upon a time. इंडिया में भी कोलार गोल्ड फील्ड है हमारे पास, अनंतपुर गोल्ड माइन है, मध्य प्रदेश में कुछ रिजर्व है इसके. बट एक्चुअली वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लाइक इट यूज्ड टू बी साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका, एज आई टोल्ड यू, 60s 70s में साउथ अफ्रीका वाज लाइक ए वेरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. इनफैक्ट कि इसका इतना पीक प्रोडक्शन आज तक शायद किसी कंट्री ने अचीव नहीं किया, नीदर लाइक इंडिया एज वेल. हाउएवर व्हाट हैपेंड, साउथ अफ्रीका में प्रोडक्शन कम हो रहा है, एंड चाइना इज नाउ गेनिंग दैट मोमेंटम, बिकॉज अगेन चाइना बेसिकली नाउ एस्पायरिंग सुपर पावर है, तो फिर उसका माइनिंग और मिनरल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, एंड यू विल फाइंड कि गोल्ड का प्रोडक्शन इज नाउ इंक्रीजिंग देयर. एंड देन साउथ अफ्रीका, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अप टू 2006. However, nowadays or after that, see the South Africa's production is declining, and China became the largest producer of this gold. अब वैसे गोल्ड के रिजर्व्स मतलब बहुत ज्यादा तो वर्ल्ड में एनीवेयर यू वोंट फाइंड, राइट, तभी इसकी प्राइस बहुत ज्यादा भी होती है. एंड व्हाट दिस गोल्ड इज यूज्ड इन डिफरेंट metallurgical industries, like you'll find in electronics as well, you'll find in jewelry makings है, और बाकी उसके जो uses होंगे in high end technological work, gold is actually used in. So this गोल्ड, फिर से इसका देखो, इसका वर्ल्ड फेमस रीजन है वैसे भी, दिस जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, एंड देन दिस वन किम्बरली. दिस किम्बरली दैट इज द सेम रीजन यू विल फाइंड, एक ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया वो भी एक माइनिंग डेस्टिनेशन है ओवर इन दी रीजन. इसका वैसे ये अफ्रीकन ही नेम, सॉरी यूरोपियन नेम है, जो अफ्रीका में भी और वहां पे भी दिया है. सो जोहान्सबर्ग, दिस बॉक्सबर्ग एंड ऑरेंज फ्री स्टेट, सो ये कुछ इसके प्रोडक्शन सेंटर्स है. नेक्स्ट है यूएस, द सॉल्ट लेक रीजन और ग्रेट लेक रीजन, दिस रीजन्स आर हैविंग इक्वल प्रोडक्शन ऑफ दिस गोल्ड. एंड देन ऑस्ट्रेलिया, दिस माउंट मर्गन, दिस कैलगुरली एंड कुलगाड़ी. ओके, दिस आर व्हाट दी फ्यू डेस्टिनेशंस है कि जहां पे गोल्ड का प्रोडक्शन होगा. बट एक ऑरेंज फ्री स्टेट, हाँ बिल्कुल. अब ये मत पूछना सिर्फ क्यों, वो तो उन्हें ही पता रहेगा, है ना. वैसे गूगल कर लोगे तो मिल भी जाएगा.
तो गोल्ड, नेक्स्ट है सिल्वर. Silver, more than mining, actually silver is a byproduct of industrial process. That the thing is कि सिल्वर का वैसे प्रोडक्शन माइनिंग से भी होता है, बट स्टिल इसका मेजर जो प्रोडक्शन होगा ये एज एन इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट. लाइक इंडिया डज नॉट हैव ए सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ सिल्वर, बट हमारे पास देखो सिल्वर कॉइन्स वगैरह होते थे, तो फिर भी हम सिल्वर का एक इंपोर्ट करते थे फ्रॉम द अदर कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. In the world as of now, Mexico is the largest producer of the silver. Apart from फिर Mexico, फिर African countries you anyway find कि जिनका production है, along with कि जिसमें Canada, कि जिसमें Canada, okay, then US, Australia, Bolivia. These are what few destinations are producing silver. अब Mexico में this, हाँ काजल, चिहुआहुआ है ना. So अच्छा ये डॉग ब्रीड है. तो डॉग ब्रीड इन द सेंस व्हाट कि ये लोकेशन का नाम है, और जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है वो ब्रीड का नाम उसी का अटैच्ड है. जनरली ब्रीड का तो ऐसे ही होता है ना, अमेरिकन बुलडॉग या ब्रिटिश बुलडॉग या लैब्राडोर, ये क्या है, ये लोकेशन है, वहां पे ये ब्रीड एंडेमिक है, तो इसी का नाम फिर इसको दे दिया है, ऐसे है. दिस, ये भी यही है, दिस चिहुआहुआ, राइट. ये जो है लोकेशन है, और फिर वहां से ब्रीड और जो भी स्पीशीज होगी. एंड हिल्डागो, these are what the production centers of Mexico. वैसे Mexico is one of the largest producer of this silver. Canada, Ontario, British Columbia, Quebec, US, Utah, right? These are what the few region है जहां पे silver production is observed. Then तो मैक्सिकन ब्रीड ही है ना, और कौन सी होगी वो. डायमंड. देखो डायमंड इज one of the like in terms of geology, it is the oldest mining reserve. अगर उस सेंस में हम देखेंगे तो डायमंड इज रादर वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइनिंग रिजर्व्स है, कि जबकि इसका प्रोडक्शन इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 3 billions ऑफ ईयर्स. कि जो भी माइनिंग्स आप देखोगे ऑफ द डायमंड, सी दिस माइनिंग्स आर ऑफ द 2 to 3 billions ऑफ ईयर्स. एंड लाइक इन इंडिया, ये है पन्ना में, पन्ना मध्य प्रदेश, you will find only diamond reserves in India. And like in the world, Botswana is one of the largest producer along with the Russia, और फिर other countries है like say Russia, Botswana, Canada, Australia, South Africa. This one Botswana is anyway the leading producer of the diamond. Then nickel, Russia, Canada, tungsten, China, और बाकी देख लो अभी सारे जो मिनरल्स एंड मेटल्स है ओवर इन दी वर्ल्ड. एंटीमनी देखो गूगल पे, उसका कलर समझ आएगा. ये इंडस्ट्री में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज होता है. ग्वांगसी, जुआंग. मर्क्यूरी जैसा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में और बाकी भी और भी जगह पे यूज होता होगा, बट इसका डोमिनेंट यूज. सो लेट मी चेक इस पे पीवाईक्यूज कौन सा है. वैसे ज्यादा पीवाईक्यूज है नहीं ऑन दिस टॉपिक.
सो दिस पीपीटी विल बी अपलोडेड ऑन द ग्रुप, ठीक है। बाकी तो पीपीटीज मिल गए कल, और ये भी मिल गया जो लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल, इसका नहीं मिला है ना, रोस्टॉक स्टेजेस ऑफ, उसका कंटेंट भी देना था ना, उसका कंटेंट भी, चलो ठीक, बट इजी तो है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो कंसेप्ट है नहीं। सो देखो अब नेक्स्ट जो वर्ल्ड रिसोर्सेस हमने देखा, एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज वर्ल्ड इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड इंडस्ट्रीज, अब रिसोर्सेस अगर कुछ लोकेशंस याद है या आइडेंटिफाइड है कि प्रोड्यूसर, देन अकॉर्डिंगली यू कैन कनेक्ट विद द इंडस्ट्री। सो स्टार्टिंग विथ इंडस्ट्री, क्या होती है वैसे इंडस्ट्री, कुछ आइडिया? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते फाइनल प्रोडक्ट में। फिर माइनिंग इंडस्ट्री है, माइनिंग प्रोसेस, माइनिंग इंडस्ट्री ऐसे सुना कभी? नहीं। अच्छा, देन टूरिज्म इंडस्ट्री सुना है कभी? नहीं सुना है। तो टूरिज्म में कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सा फाइनल प्रोडक्ट है? बैंकिंग इंडस्ट्री सुना है कभी? एजुकेशन इंडस्ट्री सुना है। तो इसमें कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सा फाइनल प्रोडक्ट है? हाँ, रॉ मटेरियल यू। हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, यू आर इक्वली पोटेंशियल, है ना। और फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ओके। फिर फैक्ट्री भी होता है, फैक्ट्री, फैक्ट्री और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस है? छोटा भाई, ओके। वैसे इसको इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे हम कि इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये वाली चीजें जनरली, वैसे देखो फैक्ट्री इज व्हाट, सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट है,
ठीक है. Generally factory is what? A simple processing unit, group of interconnected factories and their services, then it leads to a industry in total. तो industry is rather a broad term कि जो मतलब बहुत सारे entities को या group को include करता है, keeping their interaction, keeping their services as well. So that forms like industries itself. Okay, or the process of industrialization is simply जहां पे incremental development of industry and industrial linkages are rather observed. इंडस्ट्री, इसकी डेफिनेशन लिख लो. इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्री is a group of interconnected producing units or centers. Is a group of interconnected units, producing units or centers along with their service operations. It is this simply, full stop, it is this simply a large grouping of various stakeholders striving to achieve a common production goal or target. Next, industrialization refers to the transformation of a manual labor based economy
to a machine labor driven industrial society. To a machine labor driven industrial society. It involves it involves a systematic change of involves a systematic change of the agrarian economic system of the agrarian economic system agrarian economic system to a complex mechanized mechanized mass producing process. Mass producing process. The gradual adoption of machine-based production methods. Machine-based production methods creates jobs. Creates jobs. Boost productivity. Boost productivity. Accelerates economic growth. Accelerate economic growth and raises standard of living. And raises standard of living. History of world industrialization. History of world industrialization. It all started in Britain. It all started in Britain. जैसे हम consider करते हैं तब से. In the second half of the 18th century. In the second half of the 18th century. When when the factory based system and mechanized mass production processes and mechanized mass production processes were promoted. However, its origin dates back to. However, its origin dates back to well before the factory system dates back to well before the factory system was fully operational. Factory system was fully operational.
The Industrial Revolution began in the Industrial Revolution. जबकि हमने इसको लिखा तो था industrialization, but Industrial Revolution began in the mid 18th to early 19th century. To early 19th century in Western Europe and North America. In Western Europe and North America. The transition of farm-based economy, the transition of farm-based economy to an industrial system became apparent in Britain. In 1760. Which in 1760, which gradually spread to other countries, of the world. The process of industrialization, next, the process of industrialization is generally having following characteristics, is generally having or has following characteristics. Transformation from raw material to production based economy. Transition from raw material to production based economy. Mass production. Second, mass production. Incremental use of technological methods and equipments. Incremental use of technological methods and equipments. More efficient division of labor. Higher labor productivity. Continuous technological innovation. Increased rate of economic growth. Increased urbanization.
increased urbanization, increased standard of living, increased standard of living, and last, and cultural shift of the society, cultural shift of the society. Thus, from the above discussion, industrialization is not only about industrialization is not only about the process of mass production, the process of mass production, but it has some, but it has something to deal with, but it has something to deal with. Societal values and individual life. Societal values और system लिख दो, societal system and individual life. So देखो ये है industrialization. So industrialization is a broad range process which includes various dimensions of life, और सिर्फ mass production से deal नहीं कर रहा है, तो labor division, labor productivity, then technological innovation, then cultural shift in the society, women labor या gender based, ये सारी कुछ चीजें you will find that forms a part of this process of industrialization. And now we in the 21st of century we are actually the product of this process of industrialization itself. Now देखो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ये है, पर अब इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन? फैक्टर्स डिस्कस करने हैं या नोट डाउन करने हैं? इट्स अप टू यू. डिस्कस कर लेते हैं क्या पहले? चलो. रॉ मटेरियल, ठीक है. लेबर अवेलेबिलिटी, ठीक है. लैंड, पोल्यूशन, क्लाइमेट, हाँ. हम्म. हम्म. आप ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो. नहीं कोई लॉजिक? एसडीजीज तो काजल ने याद किए है नहीं. हाँ, अब तो मंडे तो आया ही नहीं वो. इस मंडे भी छुट्टी थी वैसे. सिलेबस की यूनिट्स है हमारे पास
तो सिलेबस के यूनिट से कनेक्ट कर दो उसको, क्यों इतना सोचना है। जियोमॉर्फोलॉजी, टोपोग्राफी, माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स है। हाँ आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया ना, आ गया। सेकेंड, क्लाइमेटोलॉजी आ गया, राइट। ओशन, अच्छा रॉ मटेरियल से कनेक्ट होगा, चलो ठीक है। ओके अच्छा, तो ओशन प्रोवाइड्स ओनली वाटर। चलो फाइन। बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी ठीक है। और बायोजियोग्राफी के कितने एस्पेक्ट है, क्या क्या है बायोजियोग्राफी के ब्रांचेस? डिस्कस तो किए थे ना हमने। यही तो कंसेप्ट यूज करनी है ना। जीन पूल सेंटर पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ ज्योग्राफी पढ़ा था, राइट। डोंट यू थिंक कि वो यहाँ पे उसका यूज होगा, कि फॉर एग्जाम्पल कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होगी, है ना। जैसे ये डॉग सर्विसेज वाली इंडस्ट्री है, तो ये कहाँ पे फ्लरिश होगी, जहाँ पे ये एंडेमिक बायोडिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, वहीं पे तो होगी। वाइन इंडस्ट्री कहाँ बनेगी, जहाँ पे ग्रेप वाइन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, साइट्रस फ्रूट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। यस, तो डोंट यू थिंक कि बायोटिक और वाइल्ड लाइफ डिवर्सिटी इट डिफाइंस दिस वे। देन फिर क्या आ रहा है उसके बाद यूनिट? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। एनवायरमेंटल कंसर्न वुड रादर डिफाइन कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री या रिफाइनरीज व्हाई दे आर मोस्टली लोकेटेड ऑन द कोस्टल मार्जिन्स ऑफ द कंट्री, क्यों? वन ऑफ द रीजन इज पोल्यूशन कंसर्न। अगर इसको सिटी में एस्टैब्लिश करोगे तो आगरा के जैसा ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगा उसका, है ना। करोजन पढ़ा था हमने स्कूल डेज में, मथुरा रिफाइनरीज दैट लेड टू दी करोजन ऑफ दी ताजमहल। यस, देखो फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी तो डिफाइन करेंगे, से फैक्टर्स अफेक्टिंग दी। अच्छा ये लिखा ही हमने, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और दैट क्लाइमेट। हाँ देन फिर उसके बाद कौन सा यूनिट आ रहा है हमारा? पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। चलो उसमें बहुत सारे फिलोसॉफीज है, चलो हमने मान लिया इसको स्किप कर, वैसे कनेक्ट तो कभी भी कर सकते हैं। किसे बेसिकली अगर इसको देखना है तो नियो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच, कल्चरल ज्योग्राफी, सारे कुछ चीजों से कनेक्ट कर सकते हो, बट चलो ठीक है मान लिया हमने नहीं किया। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, डोंट यू थिंक के वर्ल्ड एग्रीकल्चर छोड़ दो, नाउ ट्रेडिंग पैटर्न एंड रिक्वायरमेंट्स दैट डिफाइंस इंडस्ट्रियल लोकेशन, कि कौन सा ट्रेडिंग पैटर्न वर्ल्ड में डेवलप्ड हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, दैट वुड डिफाइन कि कौन सी इंडस्ट्री कहां बनेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अब नाउ से फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स मोर टेक्नोलॉजिकल गुड्स, तो अब टेक्नोलॉजिकल गुड्स के लिए फिर कौन सा पैटर्न डेवलप्ड हो रहा है, या कहां पे रॉ मटेरियल बेस है, या कहां पे कौन से गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, दैट वुड डिफाइन दी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट टू इट इज सेटलमेंट, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट वाला यूनिट है हमारा, राइट। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सेटलमेंट, देन उसके बाद रीजनल प्लानिंग, इट मींस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इजंट इट, कि कौन सी गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज डिफाइन कर रही है दैट वुड अफेक्ट द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल लोकेशन, राइट। देन फिर उसके बाद क्या हो गया? मॉडल थ्योरीज एंड लॉस, इसमें तो सारे ये यही है फिर तो, वीबर्स इंडस्ट्रियल मॉडल या क्रिस्टलार्स इंडस्ट्रियल मॉडल, लॉस सेंटर प्लेस लोकेशन थ्योरी, ये सारी कुछ चीजें यही कनेक्ट कर रही है। देन यू कैन कनेक्ट विद द फिजिकल सेटिंग्स ऑफ, जो हमने लैंड से कनेक्ट कर दिया। देन रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल्स हो गया, पेपर 2 यूनिट सारे में बता रहा हूं। देन थर्ड यूनिट इज एग्रीकल्चर, then fourth is industry itself, fifth is trade transportation communication, then sixth is culture of the society. Yes, societal culture would rather determine industrial location, राइट। जैसे मैंने बोला कि मैं शिमला गया था, राइट, तो शिमला में मैंने देखा कि कोई सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल बेस नहीं है वहां पे, जो है टूरिज्म इज रादर मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री। टूरिज्म, होटलिंग चाहे जितने देख लोगे, कैब सर्विसेज चाहे जितने देख लोगे, बाकी सारी कुछ चीजें, क्योंकि बिकॉज दैट इज शिमला इज रादर ए टूरिस्ट टाउन, वहां पे इंडस्ट्रियल लोकेशंस नहीं है। या इन दी हायर रीचेस ऑफ द हिमालयस ग्लास इंडस्ट्री इज रादर डेवलप्ड,
Yes. So don't you think culture of the region it would influence the location of the industry? Then next वाला कौन सा आ गया हमारा, फिर से सेटलमेंट, उसके बाद कौन सा है, कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट्स, देन उसके बाद आ गया, isn't it, geopolitics. See, Taiwan is basically now the semiconductor hub of the world. अब सेमीकंडक्टर हब है, वन ऑफ द रीजन इट जस्ट टू काउंटर, दो नेचुरल प्रोडक्शन सेंटर पोटेंशियल तो है ही है, बट अगेन टू काउंटर चाइना एज वेल इक्वली. तो यस देखो जियोपॉलिटिक्स इंपैक्ट कर रहा है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल लोकेशन. एंड डोंट यू थिंक देन वर्ल्ड इंडस्ट्रीज का लोकेशन इज फर्दर डिफाइंड बाय disasters, earthquake, volcano, cyclones, anticyclones, heat waves, cold waves, ये सारी कुछ चीजें डिफाइन कर रहा है. दिस वन देखो कितने पॉइंट्स बने. काजल कितने उस सिलेबस ने आपको 14 पॉइंट्स दे दिए. इनफ है, मोर देन इनफ, इतना तो राइट भी नहीं कर पाओगे. यस, सो दिस all are those factors affecting geographical location, provided you have to connect it with the geography, geographical knowledge से इसको connect करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारे points relevant बनेंगे. अब इसको इकोनॉमिक एंगल से देखोगे तो फिर देयर आर थ्री प्रोमिनेंट फैक्टर, लैंड, लेबर, प्रोडक्टिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. देखो अब इसमें एक और फैक्टर जो हम भूल गए, हिस्ट्री ऑफ द रीजन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में हम इंडस्ट्री बड़े से बनाएंगे नहीं, पाकिस्तान चाइना ने देखो सीपीईसी बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं चाइना को. सो सी हिस्ट्री ऑफ द रीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन विल फाइंड गवर्नमेंट पॉलिसी, geographical area, transport, markets, then personal factors है जो individual based entrepreneurship factors है, then water supply, then sites and buildings, labor force, raw materials, energy, capital and investment. Yeah, history of the region, historical or history of the region, culture of the region, सारे factors है you'll find are responsible for this development of industrial location in the world. नेक्स्ट है देखो ये एनसीईआरटी में गिवन है वैसे ये डायग्राम, लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्री, दीज आर द प्रोमिनेंट फैक्टर्स. ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी लिखा तो है लैंड, पावर, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट. ठीक है, सो दैट वे. नाउ कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आई गेस हमने ये डिस्कस किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, नहीं किया तो है ना, किया है. चलो ठीक है, चलो फिर से एक बार इसको देख लेंगे, कोई दैट्स नॉट अ बिग डील. इंडस्ट्री देखो, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, दो वी कंसीडर के जनरली 3 है, बट देयर आर नाउ 5 न्यूली डेवलप्ड इंडस्ट्रीज है. पहली इंडस्ट्री दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री. अब प्राइमरी क्या करेगी, एग्जैक्टली ये सिंपली डील करेगी नेचर से, रॉ मटेरियल से, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, है ना, ये जो रिलेटेड है, जो कि डायरेक्टली डीलिंग विद द नेचर एंड देन कीपिंग द ट्रैक ऑफ रिसोर्सेस. सेकेंडरी इंडस्ट्री, यस, प्राइमरी इंडस्ट्री का आउटपुट इज इनपुट फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड इट विल देन क्रिएट फाइनल प्रोडक्ट जो कि कीपिंग वैल्यू एडिशन जो कि कंज्यूमर के पास जाएगा. टर्शियरी इंडस्ट्री इज व्हाट, टूरिज्म और ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी, बैंकिंग सर्विसेज, ये क्या करेगी, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और अदर इंडस्ट्रीज को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगी. बैंकिंग क्या कर रहा है, बैंकिंग फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है ना. टूरिज्म में क्या हो रहा है, लीजर एक्टिविटीज है. सो कीपिंग दिस एक्टिविटीज यू विल फाइंड टर्शियरी इंडस्ट्री हेल्प प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अदर इंडस्ट्रीज टू परफॉर्म देयर वर्क फर्दर. ये टर्शियरी इंडस्ट्रीज का. नेक्स्ट है क्वाटरनरी. अब क्वाटरनरी इंडस्ट्री सिंपली
Yes, that is research oriented, that is dealing with the innovation and invention as in, तो साइंटिस्ट है या और भी जो रिसर्च डेवलपमेंट वर्क में जो इन्वॉल्व है, ये सारे हाई एंड इंडिविजुअल्स आर बेसिकली इन दी cottonary industry. And then queenery. Now in the queenery sector, this is highest decision making area है, जिसमें ये पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, देन सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट, एमडी, सीईओ ऑफ द कंपनी, ये सारे जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पार्ट से डील कर रहा है, those are simply this part of queenery industry. So easy है. प्राइमरी जो नेचर से डील कर रहा है, सेकेंडरी जो सिंपली क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल को डील कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस कर रहा है, टर्शरी जो इन सारी इंडस्ट्रीज को फंक्शन करने के लिए हेल्प कर रहा है, देन फोर्थ है quaternary industry, research and development and innovation, fifth is the high end decision making or high level decision making, say that is dealing with the queenery industries. Then in the world there are like major industries as in, जिसको हम डिस्कस करेंगे कुछ एंड तक, तो जैसे कि you'll find बेसिक इंडस्ट्रीज. देखो बेसिक इंडस्ट्रीज मतलब कौन सी रहेगी बेसिक. अब जैसे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारे पास कंफ्यूजन था कि व्हाट और दैट द वे और ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट दैट वी शुड कंसीडर. एक तो पहला था बेसिक इंडस्ट्री और द अदर वाज लाइक ए कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री. So basic industry, it simply deals with say the provision of basic industrial goods, iron and steel, aluminium, मैग्नीज, और जिससे क्या होगा, यू विल फाइंड यू कैन क्रिएट मेनी फर्दर ऑप्शंस इन फ्यूचर, और व्हेन यू प्रोसीड दिस आउटपुट ऑफ दिस इंडस्ट्री यू विल फाइंड कि ये और क्या होता जाएगा, नए नए प्रोडक्ट्स बनाता जाएगा. कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री इज सिंपली दैट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री जो डायरेक्टली डीलिंग विद द कंज्यूमर नीड्स एंड डिमांड. कि कंज्यूमर नीड्स एंड डिमांड है एसी, तो एसी बना दो. कंज्यूमर नीड्स एंड डिमांड है बेसिकली फूड प्रोसेसिंग, तो फूड प्रोसेसिंग कर दो. सी, तो ड्यूरिंग दैट टाइम इवन वी वर मच कंफ्यूज अबाउट, बट स्टिल जनरली किसी भी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट होती है वो बेसिक इंडस्ट्री से होती है. सो आयरन, कोल, माइनिंग, these are the basic industry. The major producer of the steel are like say Commonwealth independent states, that is a grouping, USA, Japan, China. These are the major producer. India is equally as well. Then consumer goods industry, like example toy making industry, ये क्या है, consumer goods industry. Then metallic industry, वो ये सारी जो mining and dealing with it. Then shipbuilding industry, that is again a major industry as in Japan's, South Africa, Korea or East Asia. These countries are major shipbuilding country. इंडिया इज लार्जेस्ट शिप डिस्ट्रॉइंग इंडस्ट्री. इंडिया ये जो कंट्री जापान, दैट इज द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ठीक है. साउथ कोरिया भी, चाइना भी इक्वली. एंड इंडिया इज रादर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, मेजर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इट मींस सिंपली दैट डील्स विद द ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन. तो ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में यूएस इज एनीवे द लार्जेस्ट. अब के डेट में अगर देखोगे तो जैसे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ से पैसेंजर व्हीकल्स एज वेल. देन चाइना है, यूएस है, ब्रिटिश है, फ्रांस है, ये सारे कुछ रीजन्स है. सॉरी, दीज आर ऑटोमोबाइल हब्स ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट है रेलवे इक्विपमेंट्स एंड इंडस्ट्री. दिस आर ऑल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और मेजर इंडस्ट्रीज. अब रेलवे इक्विपमेंट का जो मेजर सेंटर है दैट इज ग्रेट सॉल्ट लेक रीजन ऑफ अमेरिका. That is very famous actually. So United States is the largest producing centers of the railway and equipment. Then the industry is in Detroit, Chicago, New York, etc. Then chemical industry. So chemical industry सारे कुछ जो industrial chemicals है या general use के जो chemicals है, those one. Textile and agro based industry. Agro based industries का best example है Australia, New Zealand, India. These are what agro based industries. तो ये देखो, ये कुछ है मेजर इंडस्ट्रियल ग्रुपिंग्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन. दो वे में डिस्कस करेंगे हम इसको. पहले इंडस्ट्रीज का कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, और सेकंड इंडस्ट्री वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. ओके, सो गो दिस वे. नाउ से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. अब मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ये समझने के लिए आपको और भी थोड़ा सा बेटर है कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अगर समझ आई तो दैट वुड बी बेटर. अब देखो major industrial region in North America, you'll find this one, Pele, that is Appalachian
रेंज, ओके, और Appalachian रीजन दैट इज लाइंग ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जहां पे प्रोडक्शन सेंटर्स बहुत ज्यादा है. इट इज रादर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन हब, पोर्ट्स एंड हार्बर डेवलपमेंट इज इक्वली ऑब्जर्व्ड ओवर देयर. इसके बाद देखो यहां पर ये वाला, दिस रीजन इज ग्रेट लेक रीजन ऑफ America and Canada. It actually lies on the boundary of Canada and America. Detroit or say Buffalo, Chicago, you will find located over on this margin. इसको अमेरिका का ये लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग सेंटर भी था. अमेरिका का ये आज भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन सेंटर भी है, दिस डेट्रॉइट एंड दैट रीजन. एंड मे बी इन दिस वेस्टर्न पार्ट San Francisco. San Francisco is the region. Silicon Valley is equally located over here on this margin, और वो भी एक प्रोडक्शन सेंटर है आईटी वाला. ब्राजील में अगर देखोगे तो ब्राजीलियन कोस्ट, ठीक है, जो यहाँ पर एक कुछ इंडस्ट्रियल बेल्ट है. सेंट्रल अमेरिका में दिस बोगोटा, दिस वन, ये मेजर रीजन्स है. इन अफ्रीका मेनली इन मोरक्को विल फाइंड दिस इंडस्ट्रियल बेल्ट rather डेवलप. बाकी फिर लिमिटेड है, जैसे यहाँ पे केप कैमोरिन नहीं, केप कैमोरिन नहीं, केप ऑफ गुड होप वाला रीजन है ना, केप वर्ड. सो यहां पर है केप वर्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट. देन इन यूरोप यू विल फाइंड दिस वन इज रूर. Then over here you'll find Donbass, that is in Ukraine. This one is Moscow industrial region. This one is Ural industrial region, है ना. तो these are what the few industrial regions है over in the world. ये है Manchurian और Manchuria industrial belt. Then this one is Japanese और Japan industrial region. यहाँ पे है जावा इंडस्ट्रियल रीजन, दिस वन. ठीक है, इसको फिर से डिस्कस करेंगे, बट अभी तो मैं आपको मैप पे लोकेट कर रहा हूँ दिस लोकेशंस. दिस इज ताइवान इंडस्ट्रियल रीजन, हांगकांग एंड ताइवान. ठीक है, तो ये कुछ मेजर देखो इंडस्ट्रियल रीजन्स है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इन दी वर्ल्ड. अब इसमें से कुछ याद तो रखने पड़ेंगे फॉर श्योर, क्योंकि जब इसका आंसर राइट कर रहे हो, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू गाइस शुड हैव दैट आइडिया. ना मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, इट इज अप टू 9 ना. ठीक है, चलो टाइम तो हो गया हमारा. एनीवे इट्स 9 नाउ, 9 PM. तो AM सॉरी, यस 9 AM. सो यस, वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला केस जो है वो कंप्लीट कर दिया है हमने. एंड देन टुमारो विल बी डीलिंग विद दिस इंडस्ट्रियल रीजन्स. देन कि इंडस्ट्रियल रीजन्स कहां पर है, कैसे है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, और इसके एक और प्रोसेस देखेंगे हम, द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, तो ये क्या होती है, उस पे भी एक क्वेश्चन या इसका कंटेंट लिख लेंगे. तो देन विल बी डन विद द इंडस्ट्रियल रीजन्स. और as I told you, this Saturday you will be having a test.